Hello everyone, we are here for preparation of Master Cadre Chemistry 2020. We are preparing here quality of the questions and please like, share and subscribe this channel. If you want to follow us on Telegram, you can join us on Telegram group study material. So about the periodic table we are already discussed. Today we are going to discuss the trends of the periodic table. So first is atomic radii. Atomic radii means the distance from the center of the nucleus to the outermost shell of the electron, but absolute size of an atom is difficult to be defined because of the following reasons. Actual size is difficult to be defined. There are two reasons for it. First reason is atom does not have well defined boundary. Atom के पास कोई भी well defined boundary नहीं है. So the probability of finding electron is never zero even at the large distance from the nucleus. Right? Next point is it is not possible to isolate an atom and measure its radius. The probability distribution is also affected by the presence of other atoms in its neighborhood. Okay, probability finding also affected by the other atoms in its neighborhood. Like we have H2 molecule, hydrogen and hydrogen. If there is chlorine, then its radius is also affected by this element, chlorine element. And if it is H2SO4, then there is also somewhat variations in their atomic radius because they are affected by their neighbors. Now we can only arbitrarily define the atomic radius as effective size, which means the distance of closest approach of one atom to the another in the given bonding situation. For example, hydrogen and hydrogen are bind together with the covalent bonding, and this atomic radii can be arbitrarily found by finding the center to center distance, right? So we can arbitrarily find the effective atomic radius as effective size, which means the distance of closest approach of one atom to the another atom in the given bonding situation. Or there are many types of bonding. For example, कोवेलेंट रेडियस वंडरवॉल बॉन्डिंग है अगर तो वंडरवॉल रेडियस होगा. आयनिक बॉन्डिंग है तो क्रिस्टल रेडियस या फिर हम उसको आयनिक रेडियस बोलेंगे. इट्स डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द कोवेलेंट रेडियस. Covalent radius. What is covalent radius? If two atoms are binding together with a covalent bond, then the distance between its center to its boundary means half of the distance between two nucleus of neighboring atoms. So that is our covalent radius. If there is covalent bonding, one half of the distance between the centers of nucleus of two similar bonded atom together in a molecule. Okay, तो two similar bonded अगर like हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, तो इनके तो हम चलो फाइंड कर लेंगे एटॉमिक रेडियाई के दोनों के सेंटर्स, दो हाइड्रोजन्स के सेंटर के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे. दोनों नाइट्रोजन के सेंटर के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे. लेकिन व्हाट अबाउट द HCl, NaCl, इन किस केस में हम क्या करेंगे तो वो भी हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेकिंग द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन, like internuclear distance between two atoms of hydrogen is 0.74 angstrom, right? Atomic radius of H2 is equals to 0.74 by
2 is equals to, it becomes about 1.7 no 0.74 by 2 is about to 0.37 angston. 0.37 angston. Right. So this is the atomic radius of hydrogen atom. Now move to the next, heteronuclear diatomic molecules. तो उनके केस में हम क्या करेंगे कि जैसे हाइड्रोजन का हमें पता है कि वो कितना होता है 0.34 हमने अभी निकाला 0.37 राइट। तो HCl हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे और टोटल यहाँ पर रखेंगे और हाइड्रोजन का यहाँ पर और यहाँ से हम क्लोरीन का फाइंड कर लेंगे। मतलब दो चीज़ें पता है, थर्ड चीज़ हम अपने आप फाइंड कर सकते हैं। मल्टीपल बॉन्ड रेडियाई के अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे बॉन्डिंग बढ़ती जाती है, जैसे अगर डबल बॉन्ड है तो उसकी जो क्लोजेस्ट अप्रोच है वो कम हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा तो उसकी रेडियाई भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो सिंगल बॉन्ड लेसर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो इसकी जो रेडियाई है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डबल बॉन्ड, एज़ कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। So move to the next one, that is metallic radius or crystal radius. This is the 1/2 of distance between nuclei of two adjacent atoms of a metal in metallic lattice. This is also half distance between the two adjacent atom nuclei. So this is the formula for this, right? And next is van der Waals radius. What is van der Waals radius? 1/2 of the internuclear distance between the adjacent atoms belonging to the nearest neighboring molecule of the same substance in solid state. These are the two neighboring molecules. लेट कि ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, तो मान लो कि ये HCl है लेट। तो इन जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का जो डिस्टेंस है उसका हाफ अगर आप कर दोगे तो वो van der Waals रेडियस आ जाएगा। So what is van der Waals radius? Van der Waals radius is equals to internuclear distance between two non-bonding nearest neighboring atoms by 2. So which is the strongest, means which is the largest radius? Because van der Waals forces are weak, that's why they are of largest radius, and metallic forces are strong than van der Waals forces, that's why it becomes short metallic radius. And covalent radius, covalent bonding is more strong, that's why radius is also short. Now what are the trends in atomic radii? Trends in atomic radii, that if we move from left to right, then there is decrease in atomic radii. If we move from top to bottom, then there is increase in atomic radii. Right? Now we are going to solve some MCQs. So बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं ये MCQs. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, P block belonging to second period is in increasing order of their radii. अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि हमने ड्रॉ कैसे करना है पी ब्लॉक को। तो मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे ड्रॉ करना है। वैसे मैंने वीडियो इसकी अलग बनाई भी हुई है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। तो पी ब्लॉक जो है वो 5 एलिमेंट्स हैं जो उनको आपने कैसे याद रखना है। जैसे फर्स्ट है
बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो इसको आपने कैसे याद रखना है, बकनो एफ, ठीक है, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो BC नो एफ, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो जो फर्स्ट सीरीज है, वेट, BCNOF, फर्स्ट जो है वो है बागी था, ठीक है। मैं AL फॉर एल्यूमिनियम, G फॉर गैलियम, I फॉर इंडियम, T फॉर टैलियम, TL, राइट। तो C जो है उसके साथ क्या है, काशी गए संत प्रभु, लेड, राइट, काशी गए संत प्रभु। और नाइट्रोजन उसका क्या है, नाना पाटेकर, ऐश, सब बिगड़े, नीचे है बिस्मत। और ऑक्सीजन इसमें क्या है, उससे टेपो, TE, और नीचे PO है, पोलोनियम। यहाँ पर है फतेह चंद बिहारी इंडिया, आयोडीन, यहाँ पर आयोडीन है, आयोडीन। और यहाँ पर था लेड, बिस्मत, और यहाँ पर था पोलोनियम, आयोडीन और एंटीमनी। तो इसमें जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन, मतलब ये वाले सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो हमने अभी क्या पढ़ा था कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो ये डिक्रीज़ करती है एटॉमिक रेडियाई, है ना। तो वो डिक्रीज़ करती है अगर, तो ट्रेंड कैसे आएगा, ये वाला ट्रेंड आएगा। दैट मीन्स राइट ऑप्शन इज़ A, ओके।